Good morning, students. Before starting today's session, first we will revise quickly all basic rules of accounts, modern approach, traditional approach. As you are aware, traditional approach, personal account, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out, nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real account and personal account are carried to balance sheet and nominal accounts are transferred to P&L in final account that you are going to understand it. So don't worry, trading account and P&L account, we transfer nominal accounts and carried personal and real account. Modern approach, asset, debit balance, expenses, debit balance, income, credit balance, liability, credit balance, and capital account also credit balance. So now first we will revise all basics of bill of exchange. Bill of exchange is divided in two parts. One is bill of exchange and second one is promissory notes. Technically, there is a difference as per law, but accounting point of view, there is no difference. So it's very simple that bill of exchange is an order and promissory note is a promise. What is the basic difference between accounting point of view? There is no difference. I already told you. And first important point in bill of exchange, books of buyer and books of seller we have to see. Books of seller means normally drawer and books of buyer is a drawee. Okay, so in the books of drawer, what is the first entry? So first entry will be debtors account debit to sales. What is the second entry? Debtors means drawee. He accepted bill. So we have drawn bill on drawee. So drawer के books में entry क्या होगा? So entry will be bills receivable account debit to drawee account. So bills receivable to drawee or bills receivable to buyer. After that, next entry, there are four situations. One is bill retained, no entry, bill discounted, bank account debit, discount account debit to bills receivable. Bill endorsed, creditors account debit to bills receivable, and last entry will be bill sent for collection, will be bill sent for collection to bills receivable. On due date, there are two possibilities. One is either honor or dishonor. Honor case, first entry will be bank account debit to bills receivable. Second and third case, there will be no entry because bill is with bank or bill is with endorsee. And in last situation, the entry will be bank account debit to bill sent for collection. In case of dishonor, I already explained you that drawee account will be debited. So drawee account will be debited. So drawee account debit to bills receivable. Second entry will be drawee account debit to bank. Third entry will be drawee account debit to endorsee. And fourth entry will be drawee account debit to bill sent for collection. In the books of drawee, entry will be purchases account debit to creditors, creditors account debit to bills payable. Then third entry will be bills payable account debit to bank in case of honor, and dishonor bills payable account debit to creditors account. So these are very simple entries in the books of drawer and drawee. I hope you revised all these entries. So let's play one quiz before starting today's session. Chalo, good morning to every one of you. Chalo, good morning, good morning, good morning, every one of you. Today, yes, I'm feeling okay, beta. No problem. So my health is also good, and I wish every one of you will enjoy my session. चलो करण सिंह जी, यस, पूरा अकाउंट्स आपने पढ़ाना चाहिए। नहीं बेटा, सभी सेशंस में नहीं ले सकता हूँ। तो गुड मॉर्निंग, यस। अनुष्का पूछ रही है हेल्थ इज गुड। यस बेटा, आज मैं एकदम फ्रेश हूँ और आज का अपना सेशन बहुत ऑसम होने वाला है, डोंट वरी। चलो, सो सर प्लीज एक्सप्लेन इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, बरकतुल्ला जी पूछ रहे हैं, यस बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो 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 फास्ट। रिबेट मींस बेटा डिस्काउंट। सौरभ वर्मा जी, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। चलो क्विज खेलते हैं 5 मिनट में। यस, आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 एंट्रीज। चलो जल्दी से मुझे बताना है आपको 3 एंट्रीज फास्ट। फर्स्ट वन, बिल एंडोर्स। आई वांट द एंट्री फॉर बिल एंडोर्स। चलो जल्दी से मुझे बताइए, बिल एंडोर्स, व्हाट इज द एंट्री? हु इज गोइंग टू आंसर? बिल एंडोर्स। चलो, what is the entry? Fast, better fast. Bill endorse. Yes. So entry will be bill endorse ka creditors account debit to bills receivable. So beta, who is answering fast? Creditors account debit to bills receivable. Beta Raghav Shah answered wrong, beta. And this time, Mr. Divesh from NRO, he answered very fast. Bill endorse. चलो, NRO का स्टूडेंट देवेश और राघव शाह, बेटा रॉन्ग एंट्री। जेबा जी, ड्रॉवर टू बिल्स रिसेबल नहीं हो सकता, एंडोर्सी टू बिल्स रिसेबल हो सकता है। एंडोर्सी टू बिल्स रिसेबल।
Okay. Oh my God. Some students answered, Arey beta, Isha Pandit, you have to improve yourself. How it is no entry? Dishonor or honor? Honor hoga to no entry, beta. Bill endorse only creditor. Bill is going out. So creditor credit to bills receivable and debit to whom it is getting, beta? Bills receivable किसको मिल रहा है? Creditors को. तो आपको ये आंसर्स आने चाहिए, फटाफट आने चाहिए आपको. चलो second one. Yes, fast. So जिनका गलत हुआ, I hope everyone understood what is the wrong entry. Those who have answered wrong. चलो second one. Bill sent for collection, honor. Bill sent for collection, honored. Very simple entry. Bill sent for collection, honored. चलो जल्दी से बताइए. Bill sent for collection, honored. Entry will be bank account debit to bill sent for collection. Who answered very fast? Bank to bill sent for collection. From Pranab. From Pranab, beta. प्रणब ने सबसे पहले आंसर दे दिया ERO स्टूडेंट. दिस टाइम ERO ने नंबर मारा है. NRO के बाद ERO. चलो एंड लास्ट वन. Yes. Last one. Sorry. Yes. And last one will be third answer. Chalo, third answer. Bill discounted dishonor. Bill discounted dishonor. Bill discounted dishonor. Bank to bet up. Many students, please, you are a CS student. Think logically what entry you are going to pass. Please. Many students are answering. Yeah, at least answering is important, but you have to revise it minimum 2 to 3 times. ऐसे ही आप कुछ एंजॉयमेंट के लिए नहीं कोर्स ज्वाइन किया है, इतना याद रखो. आपको ये एंट्रीज आनी ही चाहिए, पूरे जुबानी एंट्री चाहिए. 38 सेकंड मैक्सिमम टाइम इट नीड्स. And this time entry is by bill discounted dishonor. This time correct entry by Ziba Mukhtar ji. Draw account debit to bank. Draw account debit to bank. रोहित शर्मा जी आपने गलत एंट्री बोल दी, क्रेडिटर अकाउंट बोल दिया. आपने बोलना चाहिए था डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक और ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक. ड्रॉई और डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक. एंड विनर इज दिस टाइम CRO. सो यहाँ पे टाई हो चुका है. NRO, ERO, CRO. सो नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. In the books of Dravi.
यस, अंजलि जी बहुत पढ़ना पड़ेगा. मीनाक्षी मारी इज सेइंग सर नो एंट्री. बेटा बहुत पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू रिवाइज इट बेटा. मीनाक्षी, बैंक टू डिस्काउंट, प्रिंस सिंह, बेटा मन में आए वो एंट्री नहीं बोलते. प्लीज टेक इट सीरियसली. चलो, नो प्रॉब्लम. जिनको नहीं पढ़ना है मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूं आपको. जन्माष्टमी बनाओ, मजे कीजिए और फिर एग्जाम दीजिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. 25% रिजल्ट आता है तो हमारे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम रिजल्ट आना चाहिए. तो मुझे बार बार ये याद मत करवाने दो कि आप सीए कोर्स कर रहे हो. ऐसे आंसर्स दोगे तो कैसे होगा आपका. चलो, लास्ट क्वेश्चन एंड टाई बिटवीन एनआरओ, ईआरओ एंड सीआरओ. लेट्स सी. डब्ल्यूआरओ तो किधर भी नहीं. देयर इज नो एसआरओ ऑल्सो. यस बेटा. नाउ last question of the day. First question. Yeah, last question. So, bills payable dishonor. So, drawee के books में bill dishonor. In books of drawee, bill dishonor. चलो fast. Drawee books, bill dishonor. Yes, I will take only the names of NRO, ERO, and CRO. And winner is, this time actually winner is Wagdevi Simha from SRO. But beta, I won't take your name because competition is between NRO, CRO, and ERO. So correct answer by Kumari Mikkiji. Bills payable to creditors, and winner is NRO student. This time NRO. So today's winner NRO, Divesh and Mickey. So these are winners. इन्होंने, दिवेश जी आपने भी बचा लिया आज और एनआरओ को जिता दिया. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन नंबर 3. फास्ट sequence. I hope you are done with illustration 1 to 8. If you have any difficulty in 1 to 8, so before starting yes, 1 to 8 question, I will first tell you एक fresh mind है. So we'll start with accommodation bill. So I'm first going to explain you what is accommodation bill, and then I'm going to take some problems of, then we will see some illustration parts. Okay, not only accommodation bill, but also our remaining problems. Okay, so today's last part of this chapter. Now you are clear with all basics, beta. So this is the last part of this chapter, accommodation bill. कोई बात नहीं. सर व्हाट इज एनआरओ? सृष्टि राजपूत जी, एनआरओ मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है. एनआरओ आप नॉर्थ में रहते हो, सेंट्रल वाले रहेंगे तो सीआरओ, डब्ल्यूआरओ वेस्टर्न वाले, ईस्टर्न वाले ईआरओ, साउथ वाले सदर्न. ओके, एसआरओ. सो ठीक है. तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो स्टार्ट जिससे होता है वो विनर है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. एकोमोडेशन बिल. रेडी बेटा? एकोमोडेशन बिल के लिए रेडी हो? चलिए, रेडी रेडी रेडी. चलो, एकोमोडेशन बिल इंपॉर्टेंट. चलिए, accommodation bill. Let's start. Now, when both parties are in need of funds, when both parties are in need of funds, then one party accepts bill and another party draws bill.
one party accepts bill and another party draws bill. Chalo, okay. When both parties are in need of funds, understand, huh? It's very important. Once you get the concept of accommodation bill, you are going to understand it 100%. रिबेट मतलब डिस्काउंट बेटा, सुभश्री जी, रिबेट मतलब डिस्काउंट. ओके, चलिए. नाउ assume Mr. A is in need of 600 rupees. Mr. A is in need of 600 rupees and Mr. B is in need of 300 rupees. So total need, tell me what is the total need? 900 rupees. Total need 900 rupees. Okay beta, total need કેટલી છે? 900. Now they have only one option. Now in accommodation bill, you have only one option, that one party on whom bill is drawn. So that is Mr. B. Assume Mr. B is a drawee in our example. And who is a drawer? Mr. A. So accommodation bill mein, you have only one option. What is the option? That Mr. A will take that bill and he will visit bank and that bill will be discounted with the bank. So that bill will be discounted with the bank. Only one option. There are no four situations like retain bill or endorse bill or bill sent for collection. No beta, here is only one option. You are in need of money, so you have to compulsory visit bank and you have to discount that bill with the bank. So bank will collect some discount. Bank will charge you and bank will pay lesser amount than the bill amount. So this is the what you require. So this is a collection amount. So but obvious, Mr. A, we will charge 60 rupees discount to Mr. A. Assume these are hypothetical figures, imaginary figures. Okay. So discount kitna ho jayega? 60 rupees. And what is the bill amount now? Bill amount will be 660 plus 330. It will be 990 rupees. So amount kitna hoga? 990 rupees ये amount होगा. So 90 rupees will be discount. 90 rupees क्या होगा आपका? Discount. And bill amount will be 990. So bill, why 990? क्योंकि देखो अभी एक बार हिंदी में बता देता हूँ. Accommodation bill मतलब क्या? जब भी दोनों पार्टीज को पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे पे पैसा. ये इंडिया में अलाउड नहीं. हाँ, लिसन इट केयरफुली. दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया, बट बेटा वी हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय सिलेबस वाइज. ओके, सिलेबस में है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा. सो accommodation bill, when both parties are in need of funds, one party will draw bill on another party. So एक पार्टी दूसरे पार्टी पे बिल निकालेगी. अभी ए की जरूरत कितनी है? 600 रुपए की. बी की जरूरत कितनी है? 300 रुपए की. तो ए क्या करेगा? ए बोलेगा ए बी मेरे ऊपर मैं बिल निकालता हूं, तू बिल एक्सेप्ट कर. ए बोलेगा बिल निकालता हूं, बी तू एक्सेप्ट कर. तो बी ने भी हाँ बोल दिया. पर बिल की अमाउंट 900 की जरूरत है तो 900 से थोड़ा ऊपर अमाउंट चाहिए. 990 का अमाउंट होगा. कितने का अमाउंट होगा? 990 बिल अमाउंट. उसमें से ए का लॉस कितना होगा? ए का घाटा होगा 60 और बी का घाटा होगा 30. सो यहाँ पे 60 और 30 ये दोनों घाटे जो है ये ए और बी के रहेंगे. सो 900 का बिल है, 990 रुपीज का बिल अमाउंट रहना चाहिए, 900 कलेक्शन होना चाहिए, 990 का बिल होना चाहिए. ए कितना एक्सेप्ट करेगा? 60 रुपीज का लॉस और बी एक्सेप्ट करेगा 30 रुपीज का लॉस. फिगर्स दिमाग में बैठ गए? यस, ऑल फिगर्स आर क्लियर बेटा. इट्स वेरी सिंपल दैट ए इज इन नीड ऑफ 600 एंड ही विल bear the loss of 60 rupees and B is in need of 300 rupees and he will bear the loss of 30 rupees. And what is the total amount that will be accepted? 990 का accept करेंगे bill. 990 का accept करेंगे. So there is no purchase sale transaction. There is no purchase sale transaction here. Directly one party will accept bill and another party will draw bill. Okay, चलो तो मुझे आप लोग बताइए. चलो, let's see how many of you can answer. So what is the first way? Yes, bill drawn and accepted. So what is the first transaction? Bill drawn and accepted. Let's understand. So what is the entry that A will pass? चलो, A क्या entry pass करेगा? सोचिए.
Yes, Subhashri ji, I already explained it in English, once in Hindi, because there are many other students beta. So for them, it's a quick revision in Hindi. Okay. It's not like that I'm going to explain any concept in Hindi. I'm explaining concept first in English and then I'm taking revision in Hindi. Okay. There is no sales. Okay. So what is the entry? So beta, bills receivable account debit. Bills receivable account debit to A's account. Sorry, to B's account. In the A's books, it's a B's account. Bills receivable asset. Bills receivable asset 990. Bills receivable asset 990 to B's account 990. Okay, sir. Got the concept. Got the concept. Bills receivable account debit to B's account. And here entry will be A's account debit to bills payable. So what is the amount of bill? 990. First entry over. Now what is second entry? What is second entry? Bill discounted with bank. Who is going to discount the bill? Now bill is with A. So A will visit whose premises beta? Bank. And A will discount the bill. What is the entry? Bank account debit. A will collect 900. Discount account debit 90. To bills receivable 990. What is the bills receivable amount? 990 will be bills receivable amount. It's very simple, sir. Bank account ko 900, because in your bank account it will be 900. Cash comes in 900. Your loss is rupees 90. Wait, now it's a total loss. Now this loss is total loss. Okay, total loss. But we want only 60 rupees loss. Okay, 30 rupees loss we will transfer it to A. Transfer it to B. So to whom we will transfer that 30 rupees loss? To B. Okay, and discount till now discount is 90. How to transfer? Let's wait for some time. And beta, to bills receivable. Now bill is with bank, so bills goes out. So yes, to bills receivable 990. And what is the entry over here? It's a no entry. Why no entry? Because discounted by A. So in the books of B, there will be no entry. So this is a second entry. Understood? Now I am asking you, immediately amount is transferred to B. And now you will tell me the entry for third one. Third one. Yes, beta. With amount I want. Entry for number 3. I want amount के साथ entry. I want with amount entry. चलो कौन आंसर देता है देखते हैं. Immediately amount is transferred. Amount transferred. कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? जल्दी से मुझे बताइए कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है. कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है? जितनी जरूरत है बी की उतनी अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे. तो देखते हैं. नो बेटा, रॉन्ग. No one answered correct, beta. Who answered correctly? Bhumika.
भूमिका ने आंसर करेक्ट दिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. See, B's account debit. What is the amount? 330. Wait, 330 is the amount, beta. Total amount 330. And 330 amount is transferred to B. To cash. Only 300. Why? Arey beta, 90 rupees is a total loss. But my loss, A's loss is only 60. So 30 rupees is going to transfer, cancel discount of B, which is not my discount. So that is rupees 30. So my net discount, discount debit, discount credit, 90 debit, 30 credit. So net discount is 60. What is the net discount? 60. So this is the entry. And here, cash account debit, 300. Discount account debit, 30. To A's account, 330. अरे ए का कितना अकाउंट होगा? 330. ए के अकाउंट से 330 कम होगा. Okay, so cash comes in 300. Discount is a loss, 30 rupees to B, and 2A's account will be reduced by 330. So only Bhumika answered it correctly and logically. Okay, Shruti ji, very good. Kalyani ji, very good. Chalo. So now you understood, beta. Diya, very good, beta. And now, on due date. Now you only tell me, on due date, what is the entry that A will pass on due date? Chalo, due date पे क्या होगा बताइए. On due date. Very good, Simran. वरुण मंगला जी, देखो बेटा, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? यस, मैं अभी बाद में वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट अंडरस्टैंड. So I don't want to break this link. It's very simple. That 900 is collected by A, and out of that 300 is transferred to B, and this 300 is including discount. So discount also has to be transferred with along with cash. So 30 rupees will be discount that will be transferred to B, and B's account reduced by 330. It's very simple. And what is the entry on due date? No, beta. How it is dishonor, beta? Dishonor, let's not think about negative things. Yes. First, we have to understand what is the due date pay entry. Due date pay, beta, A use that 660 rupees. So A will send that amount, na? B's account debit to bank. How much? 660. Arey, he used it for 3 months. So that amount you have to transfer on due date. Apply logic. And what is the entry over here? A's account, sorry, it's a cash account debit or bank account debit to A's account, 660. And what is the fifth entry, beta? What is the fifth entry? So on due date, 660 you used. So 660 you have to transfer. 660 you have to transfer. आज जितना यूज किया उतना तो पैसा देना पड़ेगा ना बॉस. क्या कर रहे हो? इतना सिंपल है. अरे 990 रुपया ए ने कलेक्ट किया, 330 उसमें से एक ने बी को दिया विद डिस्काउंट. 660 ए ने यूज किया तो 660 भेजेगा ना ड्यू डेट पे. पेमेंट कहां से करेगा? बी के कहां से? क्या ऊपर से पैसा आया क्या? एकोमोडेशन बिल है. ड्यू डेट पे पैसा भेजना पड़ेगा बॉस. And last entry, no entry in these books, A's books, no entry in A's books. And here, bills payable account debit to bank, 990.
खत्म accommodation bill. It's so simple. Bills payable to bank 990, 990. Nothing difficult. अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार हिंदी में बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ए और बी दोनों जरूरत में है 900 रुपए की। ए की जरूरत है 600 की, बी की जरूरत है 300 की। एकदम सिंपल है एकोमोडेशन में, पर उतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए। 600 और 300 रुपए की जरूरत है। 60 रुपए का डिस्काउंट ए लेगा, 30 रुपए का डिस्काउंट बी लेगा, क्योंकि भाई बैंक पैसा देगा। पैसा कौन देगा? ए बी को बोला कि ये मुझे 900 रुपया चाहिए, तो ऐसा तो हवे में से पैसा नहीं आने वाला। पैसा आने के लिए बैंक में ही जाना पड़ेगा। रिटेन करके कोई फायदा है? कबड़ में से पैसा आने वाला है क्या? नहीं। इंडोर्सी से पैसा आने वाला है? नहीं। एजेंट लोग, वो लोग भाई लोगों के पास से कहाँ से पैसा आएगा? तो बिल एजेंट वाले भी नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास? ऑप्शन बचा एक ही ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बचा? एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि बिल जाके बैंक में से डिस्काउंट करके आओ। चलो सर समझ गया। अभी बिल जाके मैं बैंक में से डिस्काउंट करके आएगा तो पहले मुझे 990 का डिस्काउंट लेना पड़ेगा। कितने का? 990 रुपए का बिल निकालना पड़ेगा एक दूसरे पे। तो बिल्स रिसीवेबल किसके लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ? ए के लिए। टू बीज अकाउंट 990 990, वो क्या एंट्री किया? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 990 990। खत्म हुआ सब। पहला तो समझ में आया। तो दूसरे का क्या? दूसरा बैंक में गया। दूसरा प्रोसेस क्या? ए गया बैंक में, 900 रुपया लेके आया। 900 रुपया इकट्ठा किया। बैंक अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अकाउंट बैंक को देना पड़ेगा। बैंक क्या फोकट में देने वाली है? तो डिस्काउंट अकाउंट 90 टू बिल्स रिसीवेबल। बिल गया बैंक के पास, तो 990 बिल गया। अभी इमीडिएटली उसमें से क्या हुआ? 990 का पैसा आया, तो ये क्या पूरा का पूरा पैसा खुद खाएगा क्या? अरे भाई 300 रुपए भेजना है उसको, 90 रुपए उसका लॉस है क्या? नहीं, 90 में से मेरा लॉस 60 ही है। 30 रुपया बी तुझे ट्रांसफर करेगा, मैं लॉस। बी तुझे मैं ट्रांसफर करेगा 30 रुपया लॉस में। ए हूँ मैं, ए हूँ। तो बी को मैंने 330 रुपए से बैलेंस कम किया, पर कैश कितना भेजा? 300 रुपए भेजा। 300 रुपया ही भेजा। टू कैश 300 एंड टू डिस्काउंट कितना? 30। डिस्काउंट डेबिट में 90 था, क्रेडिट में 30 हुआ। मेरा डिस्काउंट, मेरा लॉस 60 है ही ना, तो मेरा लॉस, ए का लॉस 60 है। अभी बी क्या एंट्री करेगा? अरे कैश भैया आ गई, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 330 330। सर समझ में आया। फिर उसके बाद ड्यू डेट आया। अरे भाई 660 यूज किया है, 660 यूज किया है, 660 हमने यूज किया है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? 660 रुपीज हमें ड्यू डेट पे भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा? 660 रुपीज हमें ए को भेजना पड़ेगा। ओके सॉरी, बी को भेजना पड़ेगा। कौन भेजेगा? ए भेजेगा। बीज अकाउंट डेबिट 660 टू कैश। अरे 660 डिस्काउंट नहीं ट्रांसफर करेंगे, 30 ऑलरेडी डिस्काउंट ट्रांसफर किया उसको। अभी और 60 तो मेरा लॉस है, तो मैं सिर्फ टू बैंक लिखूंगा। और बी क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 660 660। हो गया सर। अभी ड्यू डेट पे क्या होगा? अभी बैंक किसके पास जाएगी? बैंक मेरे पास तो नहीं आएगी, मैं ए हूँ। तो बी के पास बैंक जाके बोलेगी, बैंक को बोलेगी पैसा दो पैसा दो। तो बैंक बिल्स पेबल अकाउंट बी क्या करेगा? बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी, कैंसिल की टू बैंक अकाउंट 990। अभी सर इसका अल्टीमेट इफेक्ट बताइए, कितने लोगों को समझ में आया? चलो टेल मी इफ यू अंडरस्टूड। यस प्लीज टेल मी सर अंडरस्टूड करके। चलो 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 फास्ट। यस भाई लेवल इंप्रूव कीजिए। यू हैव टू इंप्रूव योर लेवल। नाउ यू आर ऑलमोस्ट एट ऑन 6th chapter. You are not on first chapter. First chapter we covered very slowly, first two chapters. But now 6th chapter you have to improve your level. ये कोर्स है। ओके, इट्स वेरी सिंपल यार। ए wants to use 600 rupees, B wants to use 300 rupees. A will take discount of 60, B will take discount of 30. A will get money from bank and B has to pay that amount to bank. A will collect 900. A will send rupees 330 immediately, but only 300 he will send. 330 will be cancelled and discount will be transferred 30 rupees. And on due date, he will transfer 660 rupees without discount because he used it. So whatever amount immediately transferred, so discount is also transferred. And on due date, it is transferred, then discount is not transferred to B. Discount will be borne by A only. How much discount by A? 60 rupees. And how much discount is by B? 30 rupees. बेटा खत्म हुआ रे, काय को इतना टेंशन लेने का?
सौरभ वर्मा, थोड़ा समझ में आया बोला तो कुछ भी नहीं समझा समझने का। सर 100% समझ में आया बोलने का, ऑलवेज 100%। सर आई विल गिव माई 100%। मैंने, आई हैव क्रिएटेड दिस एग्जाम्पल टू क्लियर योर all doubts. This accommodation bill. This is a only simple example I have given you to understand accommodation bill. Now, don't say, na, yeah, 300, 600, what is wrong with you? It's very simple. Once I will summarize this in English, because South Indian students are asking me to speak it in English only. So, beta, yes, South Indian students, please, I know your grasping is good as compared to other rest of India. Yes. So listen carefully. Mr. A is in need of 600 rupees. Mr. B is in need of 300 rupees. See, this is the accommodation bill. Means when both parties are in need of funds, they raise in the same way. But in India, this is not allowed. First thing, still we have to understand this concept carefully. Mr. A 600 rupees and Mr. B is 300 rupees. So total bill amount is 990. Why? Because bank will charge something that 60 rupees will be borne by A and 30 rupees will be borne by B. So Mr. A will pass entry bank account debit. So first, sorry. First entry will be by Mr. A that he will draw bill. So bills receivable comes into B's account. B is my liability. A's account debit to bills payable will be the entry by B. Now, beta, we have only one option that we have to discount this bill because otherwise we do not collect any cash. So bank account debit, discount account debit to bills receivable, that is a 990 and 990 will be the entry and no entry in the books of B. Yes. So now immediately, yes, A will transfer 330 rupees because B is in also need of 300 rupees. But wait, he will transfer 30 rupees ka loss also. So B's account debit 330 to cash 300 to discount 330. And here entry will be cash comes in. So cash account debit 300, discount account debit 32, A's account 330. B's account debit to bank account 660 on due date because discount is not transferred by A. He used that money 600, so he will transfer 660 rupees on due date and cash account debit to A's account 660. No entry in the books of A, and bills payable account debit to bank entry will be in the books of B. It's the last entry. And if you see ultimate effects, see ultimate effects. You can check here, bills receivable account is getting cancelled. B's account. Now you can see what is B's account beta. B's account 990. Then in second entry, there is no B. B is a credit balance. Then B has a debit balance 330. And again, B has a debit balance 660. So B balance in the A's books is 660 plus 330 minus 990. So zero balance. Now you can check bank account. Bank account, you can check it's a 900 rupees debit. Then cash transfer 300. So 600 is a total bank balance, still 600. And then 660 is the balance which is transferred to B. So ultimate balance, ultimate effect to bank 60 rupees because 900 collected minus 300 minus 660. So 660, so 30 rupees, 60 rupees is a closing bank balance, which is showing credit balance. So bank over. And last one is a discount. Discount 90 debit and 30 credit. It means discount has debit balance. So ultimate entry, discount account debit to bank 60. In the books of, this is the ultimate entry. Other accounts are getting cancelled. Which account? Discount account is remaining. Bank account is going to cancel. And bank account is also showing 60 rupees balance. B's account will get cancelled and bills receivable account is getting cancelled after all these debit and credit. Only entries remaining. Discount here, it's a 30 rupees to bank 30. You can check discount to bank 30. Let's check it. See, A's account 990. A account 990. To A's 330. 990 debit, 330 credit, and 660 credit. So A's balance is 0. A's balance is 0. Second entry. Bills payable is debited, is credited in this entry. No bills payable, no bills payable, no bills payable, and bills payable debit. So ultimately, bills payable is going to cancel.
cash 300, you can check here, 300 debit, 660 debit, so total 960, and credit is 990. So beta, debit 960, credit 990, so credit is more by 30 rupees, credit is more by 30 rupees. And last account is discount account, only this discount account 30, nowhere discount account, all others account are cancelled, so discount 30. So you can see ultimate entry, so last में एक ही एंट्री बचता है, सभी एंट्रीज को डेबिट क्रेडिट किया, तो आपका एक ही एंट्री बचता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. दिस इज ऑल फॉर accommodation bill. I hope you enjoyed accommodation bill. बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? ओके, Harshita Fikriwala is saying, sir, thank you so much. I clear my CA foundation because of you. Thank you, beta. Yes, best of luck for your inter journey. क्यों समझ नहीं पाते हम लोग accommodation bill? Because you are not thinking logically. And students are not taking accommodation bill seriously. That's why, because their base is not clear. Why we are doing this? Because both parties are in need of funds. बेटा कुछ है ही नहीं इसमें. क्यों नहीं समझ में आता? ट्राई कीजिए, वापस रिवाइज कीजिए, घर जाके कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहना है, तो कैसे होगा? घर पे मैं रिवीजन ही नहीं करूंगा, जोर जोर से एंट्रीज बोलना पड़ेगा बॉस. चलिए कोई बात नहीं, हो गया. कंसिस्टेंसी तो है नहीं हम में, हम लोग ये रिवाइज नहीं करेंगे सर तो कैसे याद रहेगा? हमें तो बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा. ऑल एंट्रीज फ्रॉम डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बहुत रोज 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 करना पड़ेगा. जब तक पूरा याद नहीं रहता, नींद में से भी उठ के पूछा, बिल एंडोस सर, बिल एंडोस क्रेडिटर्स टू रिसीवेबल सर, बिल एंडोस ऑनर नो एंट्री, बिल एंडोस डिसऑनर सर, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, बहुत सिंपल एंट्रीज है सर. बिल डिस्काउंटेड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. So bill discounted honor, no entry. Bill discounted dishonor, sir, debtors account debit to bank account is very simple, sir. Bill retain, no entry, sir. Bill retain honor, bank account debit to bill receivable. So bill retain dishonor, debtors account debit to bill receivable. ऐसा जुबान नहीं होना चाहिए, तो सीखने में मजा है. तो समझाने के बाद भी मैं घर पे कष्ट नहीं करूंगा तो कैसे होगा? थोड़ा तो मुझे एफर्ट्स लेना पड़ेगा. एफर्ट्स के बिना क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. चलो कोई दिक्कत नहीं. आई नो आवर दिल्ली स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स विल टेक डेफिनेटली एफर्ट. अरे भाई कितना अच्छे फैकल्टीज लाके आपको सिखाया जा रहा है. जस्ट बिलीव कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये दे रहे, सो वी आर ऑल्सो इनकरिंग कॉस्ट एंड स्टिल यू डोंट वांट टू स्टडी. डेली रिवाइज कीजिए. यस, चलो. So now let's move to illustration number 3 and 4. Sequence. Okay. क्या क्या क्या? हाँ हाँ, वो अभी बड़ा करूंगा मैं, कोई दिक्कत. अभी दिख रहा है ना पहले का? हाँ अभी ये दिखेगा, एक सेकंड. अभी दिख रहा है? ओके, वो जस्ट. चलो लेट्स स्टार्ट. इलस्ट्रेशन नंबर, why it is called as accommodation bill? Better because both parties are in need of funds. Why this is not applicable in India? Okay, good question. Why this is not applicable in India? बेटा इंडिया में सभी लोग नीडी है और बाद में पैसा देंगे नहीं देंगे भरोसा नहीं है, तो इज बेटर नॉट टू अलाउ एकोमोडेशन बिल. यहाँ तो हर कोई नीडी है ना बेटा. सो आई विल ड्रॉ बिल ऑन यू एंड सपोज इफ आई डिसऑनर दैट बिल, सो बैंक कहाँ से पैसा लाएगा? बैंक तो डूबेगी. सो दैट्स व्हाई इंडिया में अलाउड नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. चलिए चलो लेट्स स्टार्ट. इलू 3. तो इलस्ट्रेशन 4 इज प्लेइंग इन वर्ड्स. ओके ऋषि, करने दीजिए, कितना भी खेलने दीजिए, हम लोग उसको तैयार रहेंगे. ऑन 1st January 2020,
Ankita sells goods. Okay, sir. Ankita sells goods. So in the books of Ankita, sir, books of Ankita. So sequence. Can you explain me the sequence? Chalo. Have you written this sequence? See how many of you can write this sequence, beta. Yes, I have given you one task before starting these entries. How to recall it? You have to do sequence first. Yes, can you tell me sequence of this question? On 1st January 2020, Ankita sells goods to for rupees 5 lakhs to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika accepts it and returns to Ankita. And on 1st March 2020. So what is the bill due date, maturity date? 3 months bill. 3 months bill. So February, March, April, 4th April. 4th April is a maturity date. But Bhavika retires it on 1st March. That is before 1 month. Retirement means paying earlier. So renewal means paying late. And retirement means before due date. Before due date. Payment. So if Bhavika is paying before due date, it means she should get some rebate, some discount, some rebate, some discount. And that discount is income for Bhavika, gain for Bhavika. Not income, it's a gain for Bhavika. Correct? Hai? But loss for Ankita. Ankita is getting 1 month early payment. She received 1 month early payment. And in that case, she has to give some discount. So for Ankita के लिए Bhavika retires it, so Bhavika के लिए gain. And for Ankita, discount is loss. In this question, opposite. In case of renewal, interest is income for Ankita. Assume if it is a renewal. Renewal means first bill dishonor, second bill will be accepted. Logical. तो जल्दी पेमेंट किया तो क्या होगा? जल्दी पेमेंट किया तो अंकिता बोलेगी कि भाई जल्दी पेमेंट किया तो मैं तुझे डिस्काउंट देती हूँ. एंड भाविका बोलेगी मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैं 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रही हूँ. तो भाविका के लिए गेन होगा, भाविका के लिए पैसा बचेगा, 1 महीने का डिस्काउंट उसको मिलेगा. एंड अंकिता के लिए डिस्काउंट लॉस हो जाएगा क्योंकि उसको 1 महीना जल्दी पेमेंट का कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा. इजी छे? Yeah, beta, we do not have Priya Pandit ji option. Ankita has to take that discount. Okay, if the early payment is making, yes, beta, कौन जल्दी payment छोड़ देगा? Suppose if my office, or if my debtor, if he is paying early payment, okay, he is paying me earlier in on due date को ज़्यादा जल्दी pay करेगा, so definitely I will give some cash discount. Okay, so this is a rebate loss. So books of Ankita, sales entry. Credit sales. Then second entry, bill drawn. And third entry will be bill retired. In bill retired, loss, discount. Discount is loss. And books of Bhavika. First entry is purchase. Second entry is bill accepted. And bill retired. Cash, here it is cash received. Here it is cash paid. And discount is gain. You can write this sequence.
You can write the sequence of illustration 3. Easy che? Yes, Adish Shah, thank you, beta. Sir, noting charges I will explain na. Don't worry, beta. Don't worry. Noting charges मैं explain करेगा रे तुम्हें. Noting charges. Yes. In case of bill dishonor, that I will explain you. Don't worry. थोड़ा लिख लो ये. Okay. So what is the entry for sales? Bhavika to sales account. Bills receivable to Bhavika account. Yes. Which account is getting open? Bhavika is getting, beta, Bhavika account is getting open. Bhavika account is getting closed. Okay, that you have to understand, open and close account. Bills receivable, beta, opened, asset opened. And bank account, now beta 5 lakhs. How to calculate discount? 5 lakhs into, so what is the 12% per annum? And we are making early payment by 1 month. So 1% per month. 5,000 आएगा रे. It's very simple. 5,000. Bank account debit. Rebate account debit to bills receivable. खत्म हुआ. Bills receivable closed. खत्म. Next one. Please understand which account is getting open and closed. So you will understand it quickly. ठीक है? तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सर का अकाउंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज में सर क्या सोचते हैं, दैट थिंकिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ सर थिंक, सर थिंकिंग वे दैट यू हैव टू ग्रास्प. Sir thinks Bhavika account is getting open, then it is bills receivable to Bhavika. Bhavika gets closed. Then bills receivable account is getting cancelled. So bank account debit, rebate account debit to bills receivable. Bills receivable account is getting cancelled. Bank account is there, and rebate is loss. So rebate is for here. For Ankita, it is a loss. Purchases is my expenses to Ankita. Ankita account is getting opened. And Ankita account to bills payable. Bills payable is my liability. By liability opened. Ankita closed. Because she is not paying me in cash. She is accepting bill. So her account is getting closed, and instead of that, bills payable account is getting open. And then bills payable liability is getting cancelled. Bank account cash goes out, reducing. And rebate is my gain. So beta, these are the entries. Now it's very simple. Sir, please do revision, sir, for me. अरे कहां से वरकुल्ला जी आपको तीसरी एंट्री रॉन्ग लग रही है? But Diksha Agarwal ji, this topic is almost for 8 to 10 marks bill of exchange weightage. Do you think this chapter is easy or difficult one? मुझे तो बहुत इजी लगता है, कुछ है ही नहीं है चैप्टर में. Why you are taking tension यार? कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, कौन सा अकाउंट ओपन होगा, खत्म हो गया. इतना सिंपल चैप्टर है. इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाते हैं. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4. Journalize the following transaction in the case Katrak books. Katrak के बुक्स है. So we are Katrak beta here. We are Katrak. Katrak books. चलो लास्ट क्वेश्चन बिफोर ब्रेक. एक 5 मिनट का क्वेश्चन है. बिफोर ब्रेक हम लोग ले लेते इलस्ट्रेशन नंबर 4, और उसके बाद मैं एक डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन लेने वाला हूँ. ओके, सो एक डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन. आफ्टर ब्रेक आई नीड यूर 100% फोकस. सो वो हम लोग देखने वाले आफ्टर ब्रेक. दैट इज एकोमोडेशन बिल का एक क्वेश्चन. एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इलू 5, 6, 7. ओके, 8. Katrak acceptance to Basu. Katrak's acceptance to Basu. Understand it. Carefully understand. Katrak ka acceptance. Sir, Katrak acceptance means, sir, acceptance of Katrak means it's a bills payable. Which account is open? Bills payable account is open.
Ah, correct, sir. And Basu was previous creditor. And we accepted bill. So Basu account is getting closed. Basu ka account is getting closed now, already closed. Why? Because we accepted bill. So instead of paying cash, we accepted bill. So Basu was my creditor. Then I paid him. No, I have not paid him. I have accepted bill. So Basu to bills payable. So now bills payable account is open. Which account is getting open? Bills payable is open. Basu is closed. Okay. We discharge it by cash payment. Oh, so sir, first bills payable dishonor. Yes, sir. Bills payable dishonor is a first entry. Write down sequence. Bills payable dishonor. Second entry. Sir, he is going to charge you interest. He is going to charge you interest. So, Katrak के लिए interest is expenditure. We are in the books of Katrak. Interest expenditure due. Interest expenditure is due. Easy che? And now third entry, we paid it in cash. So Basu account debit. Basu paid. Cash. And fourth entry, Basu, we accepted fresh bill. Accepted fresh bill. So how many entries are there, beta? 4 entries are there. सर आईसीआई ने एक ही एंट्री में निपटा डाला, ठीक है, हम लोग 4 एंट्रीज करेंगे. हाउ मेनी एंट्रीज? वी विल डू 4 एंट्रीज. आईसीआई ने एक ही एंट्री में, जब हम लोग बहुत ज्यादा होशियार हो जाएंगे तब हम लोग एक ही एंट्री में निपटा देंगे. वी आर नॉट लाइक आईसीआई, सो वी हैव टू गो लाइन बाय लाइन. ओके सर, व्हाट इज द एंट्री? बिल्स पेबल डिसऑनर. फर्स्ट बिल डिसऑनर. व्हाट इज द अमाउंट? 2500. ओके सर, आई अंडरस्टूड द सीक्वेंस. First entry, bills payable account debit 2500. You can write this. So this account is getting closed and Basu reopened. Basu reopened. Yes sir, now I understood. Bills payable account getting closed. Bills payable close हो गया था, जैसे डिसऑनर हुआ वैसे bills payable close हुआ और Basu account open हो गया. Yes, understood. So what is second entry? Interest due. Sir, interest is expenditure. How much interest? 50. Basu will charge interest. You dishonor bill, so Basu will charge you. So to Basu, 50. Basu is my creditor. Okay, understood. So what is the third entry? Third entry will be Basu account debit 1000. I'm paying cash. Basu is a creditor, becomes receiver. Sir, your fundamental rules. Yes, stick to that rules. Basu to cash. Still we have to pay 2500 plus 50, 2550 minus 1000. If you open Basu account, by bills payable 2500, by interest 50, to cash 1000, and to new bill, fresh bill. This is dishonor. This is fresh bill. 1550. So this is how Basu account is looking like. Basu credit, creditor, credit plus, debit minus. Okay, so what is the fourth entry? Basu to bills payable. What IC has done, beta? 1550. Yes. What is in the study material? See, Basu account is nowhere they have written because it is getting it's Basu debit. Basu account किधर भी ICI ने लिखा नहीं.
आईसीए ने क्या किया, बिल्स पेबल डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैश एंड टू बिल्स पेबल, एक ही एंट्री में पूरा निपटा दिया, एक ही एंट्री। सो 4 एंट्रीज थी पर आईसीए ने एक ही एंट्री ने निपटा दिया। ठीक है, जब हमारी लेवल अच्छी हो जाएगी हम लोग भी एक ही एंट्री में निपटा देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सी, यस। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यस। टू कैश, yes. Two bills payable, yes. It's a fresh bill. Baso account is getting closed now. That's why I say not open Baso account. Sir, in exam you can do 4 entries. Otherwise you can do 1 entry. Both are correct. Both are correct. Whatever you feel comfortable. Okay. चारों किया, टाइम नहीं रहेगा, एक ही एंट्री में निपटाओ। नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू पास दिस एंट्री। यस। ओके। दीप्ति शुक्ला, हाउ कैन टॉक विथ यू? चलो अभी जल्दी जल्दी बोलो, हाउ कैन टॉक विथ यू। बेटा जैसे मैं बोलता हूँ वैसे एंट्री जल्दी 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 जोर जोर से बोलने का घर पे। इट्स वेरी सिंपल। सर, इन रॉयज बुक इन इलस्ट्रेशन 3 व्हाई वी एंटर्ड बिल्स रिसीवेबल इन लास्ट एंट्री? बेटा बिल्स रिसीवेबल वी हैव टू कैंसिल ना बेटा, थर्ड क्वेश्चन में तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो अपने को रिटायर करना पड़ेगा, तो बिल्स रिसीवेबल को हमें कैंसिल करना है, रिटायर करना पड़ेगा ना, जल्दी खत्म कर दिया इसलिए। सर हेलो सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। यस भाव्या वर्मा, वेलकम टू आईसीए क्लासेस। सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। बेटा सौरभ वर्मा, मैं हिंदी में ही बार बार बोलता रहता हूँ। सर हाउ बासु विल पे, ही इज अ ड्रॉवर। नो बेटा, बासु इज अ ड्रॉवर, ही इज नॉट गोइंग टू पे, वी आर गोइंग टू पे हिम। नाइस वन सर, करेगा। ओके, प्रिंस का मुझे समझ में नहीं आया। शिवम जी, a great thanks to you sir for taking this lecture again. The previous sir, beta please don't make any arguments about teachers, they also have very less time. Every teacher is a great teacher, beta it's very difficult to explain concepts, only it is an art, so every faculty is as own is art. Okay, तो हर एक फैकल्टी का अल्टीमेटली अकाउंटिंग का नॉलेज मेरा जो है वही अदर फैकल्टीज का है, सिर्फ डिलीवरी स्किल अलग अलग हो सकता है। सो प्लीज दूसरे फैकल्टीज को नाम मत रखो, अच्छा नहीं लगता ये इन दिस प्लेटफॉर्म। शिवांगी बोल रही है सर आई गॉट इट्स क्लिस्टर क्लियर, वेरी गुड बेटा। लक्षिता बोल रही है सर कैन वी राइट सेपरेट एंट्रीज इन एग्जाम? यस बेटा, यू कैन राइट सेपरेट एंट्रीज, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू 4 एंट्रीज। यस, टुगेदर यू कैन पास 1 एंट्री और आप सेपरेट सेपरेट रख सकते हो। सर प्लीज एक्सप्लेन 3 and 4 एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो 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 चलो, बिफोर ब्रेक यस वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। चलो जी गुप्ता जी, जी गुप्ता जी, चलो जी गुप्ता के पास आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो हमें, फर्स्ट वन इज वेरी इजी। जी गुप्ता, अभी जी गुप्ता क्या बोल रहे हैं? जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस, जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस, नॉट कत्रक का एक्सेप्टेंस। कत्रक का एक्सेप्टेंस होगा तो इट्स अ बिल्स पेबल। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस विच इज रिसीव्ड बाय कत्रक, फॉर कत्रक इट इज बिल्स रिसीवेबल, फॉर कत्रक इट इज बिल्स रिसीवेबल। अरे कत्रक के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा रही। ओके, सो कत्रक के लिए क्या हो गया सर? बिल्स रिसीवेबल हो गया, कत्रक के एंगल से देखना है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ कत्रक। सो बेटा जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस व्हिच वाज एंडोर्स्ड बाय कत्रक, इट्स अ बिल्स रिसीवेबल व्हिच इज एंडोर्स, एंडोर्सी, मेहता इज एंडोर्सी। सर थर्ड सिचुएशन, bill is not with Katrak, bills receivable already closed, bill is not with Katrak, G Gupta closed. Now we will reopen Gupta, now we will reopen Mehta in the books of Katrak, and Mehta paid noting charges. Now what is noting charges? Noting charges means after dishonor of bill you have to visit that lawyer's office, you have to notarize this legal papers that bill is getting dishonored. So बेटा ये डिसऑनर जो होता है ना वो आपको लीगलाइज करके लेना पड़ेगा एक पेपर पे। वो छाते वाले लोग बैठते देखो,
कोर्ट के बाहर, अरे बेटा लॉयर सी है वो, तो वो आपको नोटराइज करके देते हैं। अंडरस्टूड दैट पार्टनरशिप डीड जो स्टैम्प पेपर मिलता है तेलगी स्टैम्प, सो बेटा वो नोटराइज करके देते दिस स्टैम्प पेपर पे, दिस बिल इज गेटिंग दिस ऑनर। फोकट में करेगा क्या? फोकट में कैसे करेगा? ही विल टेक दैट चार्जेस, एंड हु पेज दैट चार्जेस? लास्ट होल्डर, last holder of the bill pays noting charges. So what are noting charges? Noting charges means legal charges. In case of dishonor, you have to pay that notary amount. Okay. On you have to take that stamp paper, you have to pay that stamp paper ka fees to that person. So this is called as noting charges. And who pays it? That noting charges are paid by last holder of the bill. Who pays it? Last holder of the bill. Okay. So in this case, who paid it? Mehta. And we will collect it from, yes, ड्रॉवी। हम लोग किससे कलेक्ट करेंगे ये पैसा? ड्रॉवी से। ड्रॉवी कौन है? गुप्ता। एंड कौन डिसऑनर किसने किया? गुप्ता ने। पैसा किसको देना है? मेहता को। बिल हमारे पास तो है नहीं, सो एंट्री क्या करेगा? मैं एंट्री विल बी गुप्ता अकाउंट डेबिट, गुप्ता इज अ डेटर, एंड टू मेहता, मेहता is a creditor, 4020 rupees. Yes sir, Gupta to Mehta. And wait, bill withdrawn against check. सर बिल दे दिया ना मेहता जी को, मेहता जी को पेमेंट कर दिया सर, सो मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट टू मेहता. व्हाट इज द एंट्री? बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक मींस पेमेंट टू मेहता. सर गॉट दिस कॉन्सेप्ट, गॉट दिस कॉन्सेप्ट. एक बार हिंदी में बता देता. देखो जी का एक्सेप्टेंस था, जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस था, वो एक्सेप्टेंस मैं तो कतरक हूं, मैंने वो एक्सेप्टेंस लिया और मैंने दे दिया किसको? मैंने दे दिया वो बिल मेहता को. सर क्या खिचड़ी पका रहे हो? है तो है. मेहता सॉरी गुप्ता से आया, मेहता को दिया, मेहता आया ड्यू डेट पे, सर जी बिल डिसऑनर होगा. ओ वो जाके आया नोटरी के पास, थप्पा लगवा के आया स्टैम्प पेपर, 20 रुपया दे के आया गवर्नमेंट को. पर बेटा वो कल उठ के कोर्ट में जाएगा तो बाबा हाँ बिल डिसऑनर हुआ था, गुप्ता को कोई चांस नहीं है, बिल डिसऑनर कर दिया तो गुप्ता के लिए मुश्किल हो गया ये. पर अभी मेरे बुक्स में तो यहाँ पे लफड़ा हो गया. क्या एंट्री होगा? गुप्ता से मुझे पैसा लेना है, और किसको पैसा देना है? मेहता को पैसा देना है. सो गुप्ता इज माय डेटर, मेहता इज माय क्रेडिटर, एंड मेहता जी को मैंने पेमेंट भी कर दिया बैंक चेक थ्रू. मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना? 4000 प्लस 20. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. ओके सर. यस ओके सर. कैन वी डेबिट बिल्स रिसीवेबल? अरे बेटा बिल है ही नहीं, कहां से बिल डेबिट दू? बिल है किधर मेरे बुक में? मेरे पास बिल है ही नहीं. मेहता लेके गया ना बिल, एंडोर्स बिल. तीसरी सिचुएशन, मैं कहां से बिल? अरे वो सिचुएशंस याद करो, वो सिचुएशन याद किया तो पूरा जीवन सफल हो गया. इतना सिंपल है. बिल मेरे पास है ही नहीं तो कहां से दू डेबिट? रुपीज को रुपीज लिख सकते क्या? अरे सर लिखो ना, सिंबल लिखो, रुपीज लिखो, सिंबल लिखो ना. इतना क्या सिंपल है ना, ऐसा करके ऐसा लिखना है. ये क्या वाहियात क्वेरी हुआ? सार्थक जी कौन से क्वेश्चन पूछने के? सार्थक बोल रहा हूं, प्रयाग जी. थोड़ा थोड़ी तो इज्जत रखो यार. रुपीज का सिंबल का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो और 5-5 बार पूछ रहे हो. क्या रो या हंसू मैं आपके ऊपर? चलो कोई बात नहीं. तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. तीसरा क्वेश्चन, श्रुति बोल रही है सर यू सिंप्लीफाइड ऑल एंट्रीज. थैंक यू बेटा श्रुति, मेरा काम है, पैसा भी लेता हूं मैं उसका. ओके. दी दलाल रिटायर्स अ बिल 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर 10 रुपीज का डिस्काउंट. ओके सर, डी दलाल रिटायर्ड बिल. ओ रिटायर्ड, ही पेड अर्ली पेमेंट. अर्ली पेमेंट बाय दलाल. Early payment to me, I'm a katrak. So in for me that discount is my loss, because I'm getting 10 rupees extra or less. I'm getting 10 rupees less. I'm a katrak. For dalal it is gain.
For me, it is loss. Okay, retirement of bill because I'm here. I'm a drawer. Katrak is a drawer and Dalal is a drawee. So for him, it is discount gain. For me, it is loss. I'm getting 1990. Bank account debit 1990. Discount is my loss. To bills receivable account 2000. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. Think from Katrak's point of view. Next one. Next is very interesting, sir. Next is wala very interesting. Last one before break. I know now you need a break. बेटा बहुत दिमाग बाहर आ जाएगा. Accommodation bill कर लिया, इतना कतरक का question कर लिया. Very good. चलो last one of the first session का last one. फिर उसके बाद after break, yes, we are going to enjoy. चलो चलो last one you explain me. You explain me बेटा last one. चलो चलो fast. कितना सारा एक्सप्लेन किया मैंने आपको आज. Share it to maximum friends बेटा. Now, Katrak acceptance to Patel. Katrak acceptance to Patel. Rupees 5,000 discharged by Patel. Katrak's acceptance. Katrak acceptance means bills payable. Bills payable. Discharged by Patel means he has paid to someone. And Modi's acceptance to Katrak. It's a bills receivable. For similar amount. What happened? Very simple. Here Modi ji, here Katrak, and here Patel. Modi ji has accepted one bill. So for Katrak, it is bills receivable. And Katrak accepted the bill. So for Katrak, it's a bills payable. Now Modi ji will directly pay to Patel. And now against this bill. So this is discharge. So in Katrak's book, there is no more bills receivable and there is no more bills payable because this is discharge. So no bills receivable in the books of Katrak, no bills payable in the books. It gets nullified, set off with each other. So this entry will be bills payable account debit to bills receivable. Sir, simple na? Bills payable account debit to bills receivable. Khatam ho gaya, sir. Bills payable is getting cancelled. Bills receivable is getting cancelled. Pura khatam ho gaya, sir. It's very simple. So मोदी जी से जो बिल आया था, कतरक के पास वो बिल ही आगे क्या हुआ, वो बिल इसने एक बिल एक्सेप्ट किया था, इसने एक बिल ड्रॉ किया था कतरक ने. तो वह एंड में क्या बोल दिया, मोदी को बोल दिया, ये मोदी यू पे टू पटेल. सो मेरे पास ना रहेगी, लाइबिलिटी ना रहेगी, एसेट बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, कतरक बिल्स पेबल को डेबिट देगा. खत्म हो गया. यस. वेटेज 8 to 10 marks. Discharge means paid, cancelled with each other. Subhasri ji, discharge means paid or cancelled with each other. Okay. Sir, do you tell us the weightage of this chapter? Every chapter? No, beta, there is no fixed weightage. Do all topics together, na beta. It's very simple. Kya hai kya accounts mein? If your basics, debit and credit are clear, then beta, no problem. Chalo. So I hope you are clear with this illustration number 4. Ilu 5 is your homework. It's very simple. It's retirement problem. 5 and 6 is your homework. And after break, we are going to take one illustration 7 number, 8 number, and very difficult one, that is 9 number, accommodation of bill. I want 100% focus after break because I'm first going to take that illustration number 9, accommodation bill problem. 10, 11, 12 is your homework. And suppose if you find this difficult, we'll take it in the next class. Otherwise, we'll start with the new fresh chapter, that is consignment or might be goods sent on approval in the next session on Saturday.
So let's start with very interesting question number 9 after the break. Okay, thank you and take a break of 10 minutes. चलो जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए.
इलस्ट्रेशन नंबर 9, बेहतरीन इलस्ट्रेशन, 100% concepts will get clear. एक minute. I will first check your queries. Okay. Illustration number 9. On 1st July 2019, George drew a bill So George is a drawer and Harry is a drawee for mutual accommodation. Okay. ठीक है. So first thing, एक ही मिनट. I will first draw this chart. George, Harry. Number 1, for George, it is bills receivable of rupees 1,80,000. And for Harry, it is bills payable rupees 1,80,000. So very simple. For George, it is bills receivable, and for Harry, it is bills payable. Deliberately, I am writing these numberings, which will help you out while doing entries. तो ये एंट्रीज करते टाइम नंबरिंग्स बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए. तो पूरा ध्यान देना. चलिए, next. George has purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack. So who purchased goods? So here is third party, beta, Mr. Jack. One minute, beta. Okay. कुछ तो दिक्कत आ रही है. ओके. थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. यस, मेरे इसमें एक ही मिनट. हाँ, तो डायग्राम में आप तीसरा विजुअलाइज कीजिए. सो विजुअलाइज थर्ड वन, दैट इज अ जैक. Okay. So here is Jack. Now George purchased goods from Jack. Number 3, purchases rupees 1,81,000. So till now it's clear, beta. 1,81,000. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? George paid him, number 4. But how he paid him, beta? Endorsement of rupees 1,80,000. And what is discount?
that is gain. George is getting gain of rupees 1000 for George. Huh? This discount is for George. So number 4 pe bill is endorsed. So now bill is with Jack. Now here bills receivable is with Jack. Okay, understood this diagram? Very easy till now. Very easy till now बेटा. चलो यहां तक तो समझ में आया. On 1st September 2019, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. किससे गुड्स लिए है? हैरी से. 1,90,000 from Harry. So for Harry, now this is number 5, sold goods. Think from the Harry's angle. Sold goods rupees 1,90,000. And Jack endorsed the bill of exchange from George to Harry and paid rupees 9,000 in full settlement to the amount due to Harry. So beta 1,90,000 is amount which is payable. So Jack has paid endorse rupees 1,80,000 bill. Endorse that bill. He has paid cash rupees 9,000 and this discount rupees 1,000 is lost to Harry. Beta Harry is getting only 1,89,000. Now bill receivable is with Harry. Now what happened? So same bill Harry is having. Same bill which is bills payable. Now that bill is with Harry. So beta here hidden entry number 7 for cancellation of bill. Now this is very important. हैरी के पास खुद का ही बिल्स पेबल, खुद के पास ही बिल्स रिसीवेबल आया. मोदी पटेल याद आया? कतरक का क्वेश्चन नंबर 4, transaction number 4 is similar transaction. Same bill is with Harry, which is bills payable, and now it is bills receivable also. So we have to cancel that bill. Very simple. Sir, तेरा है पर मेरा है. Is very simple. Okay. Now what happened? So beta 7 transactions completed. On 1st October 2019, बेटा ये इन्हीं को समझेगा जो उतनी लेवल रखते हैं अंडरस्टैंडिंग की. ये सबके बस का बात नहीं है. इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये जिनकी सोच है वही सोच पाएंगे और उतने कैपेबल है. डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. On 1st October 2019, Harry purchased goods 2 lakhs. Harry purchased goods for 2 lakhs from George, and Harry paid the amount by check. Okay. So now sold by George 8 number or purchased by Harry. Sold by George or purchased by Harry. Correct है? And paid by check the balancing amount. Number 9. Paid by check.
balance amount. And that balance amount we have to calculate. So beta, this is a diagram for you. You can take a screenshot and you can write it afterwards. All these transactions, George books and Harry books, paid by check. This diagram will clear your all concepts one by one. Bills receivable is number one, bills payable number two, purchases from Jack, endorse the bill and take discount. Then purchases by Harry, sold by Harry and purchased by Jack, and receiving bill, same bill, and receiving cash and discount given to Jack rupees 1000. Then same bill is cancelled. This hidden entry is number 7. Then sold goods to George, sold by George, purchased by Harry, and last one paid by check, that is a settlement amount. Khatam. Are you getting this? Diagrammatic presentation, are you getting this beta? Tell me it in comment section. Yes. करण सिंह जी, डिसऑनर कैसे होगा? क्या डिसऑनर होगा बेटा? यस, लेवल रखनी पड़ेगी बॉस. यस बेटा, मेरा बिल मेरे को आता है तो कैंसिल होता है. यस बेटा, अविनाश करेक्ट है. विभू, यस सर. ओम प्रिंस शू के छो, फॉर एक्सेप्टेंस व्हाई देयर इजंट एन एंट्री इन इलस्ट्रेशन 4. बेटा एक्सेप्टेंस के एंट्री नहीं मारते रहे, वो ऑलरेडी मार चुके एंट्री. गेटिंग. बिभू सेइंग गेटिंग. श्रुति के छे, यस. मेरा बिल मेरे को आया. अविनाश बोला यस. प्रीतेश बोल रहा है यस. जयबा बोल रही है यस. गेटिंग. श्रीनिधि, वेरी गुड. सो 9 पॉइंट वंस मोर. बेटा सेटलमेंट वो तो बाकी है. 9 पॉइंट विल डू एट द एंड. The way is very easy. Isha is saying, sir, way is very easy. This is awesome question, sir. By Baraktullah ji. Bhumika Keche, yes. Crystal clear. Prince. Very good. Everyone is saying, sir, clear. अरे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने इजी कर दिया सर. क्या था ना, पूरा झमेला था. पूरा इधर से इधर भूल भुलैया, कौन किसको माल बेच रहा है, वापस अपने पास आ रहा है, कुछ नहीं. डायग्राम पूरा क्लियर कर दिया सर. डायग्राम ने पूरा क्लियर कर दिया. जॉर्ज की एंट्रीज मारो. जॉर्ज की एंट्री है 1. जॉर्ज की एंट्री 1. हैरी की एंट्री 2. हैरी का कौन सा है? 2. जॉर्ज का आया 3 नंबर. 4 नंबर जॉर्ज का ही है, एंडोर्स किया बिल. 5 नंबर हैरी का 6. 6 नंबर हैरी नो 6. 7 नंबर हैरी का है. 8 नंबर दोनों का है. 9 नंबर दोनों का है. So these are transactions. Transaction by transaction. But this is called as experience. To make difficult question very easy. Easy चाहे. चलो. Entries. Sir, diagram is clear. Okay. Gunjan Devi is saying. कुमारी मिक्की, got it sir. Very good. अरे वाह, लेवल बढ़ गई अपने स्टूडेंट्स की. डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी लगने लगे आपको. रितेश सुतार बोल रहे डायग्राम, ये इंडेक्स ये लेना है. चलो ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो. चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ग्रुप पे भी शेयर कर दो. चलो ले लिया. यस, नाउ आई विल शो यू द आंसर. Today's homework 10, 11, 12 is your homework. Okay. कल जन्माष्टमी है. आप सबको शुभकामनाएं जन्माष्टमी की. और बहुत सारे त्योहार है, पर सीए स्टूडेंट को नो त्योहार. वी हैव ओनली हार्ड वर्क.
चलो जॉर्ज के एंट्रीज फर्स्ट वी विल कवर. फर्स्ट एंट्री, बिल्स रिसीवेबल. सो व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल्स रिसीवेबल बेटा? जॉर्ज क्या एंट्री पास करेगा? जॉर्ज एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी. लेट्स चेक द आंसर. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी. यस, फर्स्ट एंट्री ओवर. देन as per our diagram, which entry beta? Third number, purchases from Jack. So what is the entry for George beta? George के लिए एंट्री क्या होएगा? Purchases account debit to Jack. Purchases च्या डेबिटला, जॅकच्या क्रेडिटला. Jack is our creditor. Hey, I will draw Harry account here. हाँ, हैरी का अकाउंट में इधर निकालेगा. हैरी को मैं लिखता हूं बाय बिल्स रिसीवेबल 1,80,000. 1,80,000 हैरी क्रेडिटेड ना, हैरी को क्रेडिट किया. तीसरा एंट्री, जैक इज रिसीवर. तीसरा नहीं है ये, हाँ ये ठीक है. चलो 1 2 थर्ड एंट्री. एंड एज पर आवर सीक्वेंस इट इज एंट्री नंबर 4, बिल एंडोर्स. तो जैक को हमने बिल दे दिया. सो जैक अकाउंट इज रिसीवर to bills receivable, bill endorse, and to discount. We are getting 1,000 ka discount. So Jack to bills receivable to discount. Yes, 1,000. Correct. Next entry. Next entry number 1 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 8. 8 8 8. Purchases by Harry sold by George. तो जॉर्ज ने सोल्ड किया. किसको सेल किया? हैरी को. हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. व्हाट इज द अमाउंट? आई थिंक रुपीज 2 लाख ना. कितने का सेल किया ये? 2 लाख का. यस, हैरी सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख. सॉरी, जॉर्ज सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख टू हैरी. सो हैरी टू सेल्स. ओके, सो हैरी को डेबिट किया. हैरी को डेबिट टू सेल्स 2 lakhs over. And now we will settle the amount. Last entry, balancing figure 20,000 by bank. So bank account debit to Harry 20,000. This is the balancing figure. Balancing figure over all 5 entries. Easy છે સર, ઘણું easy છે. 20,000 ओवर. सर हम लोग इतनी लेवल तो हाई कर ही लेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन कर देंगे. ओवर सर, ओवर ओवर ओवर. वी गॉट दिस, वी गॉट दिस. बिल्स रिसीवेबल टू हैरी, परचेसेस टू जैक, जैक टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट, हैरी टू सेल्स, एंड बैंक टू हैरी. ओनली 5 entries. How many entries? 5. And in Harry's books 1 2 3 4 5 6. 6 entries. 6 entries in the Harry's books. चलो अभी हैरी के बुक्स देखते हैं. हैरी शुरुआत विथ सेकंड नंबर. सेकंड, बिल्स पेबल. सो व्हाट इज द एंट्री? जॉर्ज टू बिल्स पेबल. चलो जॉर्ज टू बिल्स पेबल. यस, आई विल ओपन जॉर्ज अकाउंट. जॉर्ज टू बिल्स पेबल 1,80,000. ओके, जॉर्ज टू बिल्स पेबल. Fifth number. What is fifth number? Sold goods 1,90,000 to Jack. So Harry will pass Jack account debit to sales. Jack account debit to sales. Yes, 1,90,000. Second entry. How many entries are there? 6 entries. So fifth entry over. Now what is sixth entry? Endorse. Jack endorse that bill. Bills receivable. Cash discount to Jack. To Jack. So bank account debit, bills receivable account debit 1,80,000, bank account debit 9,000, discount account debit 1,000 to Jack 1,90,000. So this is the third entry. Still 3 entries are there. 7 number की entry, cancellation of bill. Very very important. Bills payable to bills receivable. Bills payable to bills receivable. Bills payable to bills receivable. 7 number की entry.
Promise me, sir, today we will revise all these entries. Hidden entry. Yeah? Next. 8 number. Purchases by Harry. So, purchases account debit to George. Purchases to George. 2 lakhs. By purchases. By purchases. And now last entry will be George to bank. Settlement of this amount. George to bank. Last entry. Sir, George to bank. Over. All entries over, sir. George to bank. Battlefield. Sir, rewatch this session. Last, after break, you can rewatch all these entries. You want to take screenshot? Wait. You want to take screenshot, तो screenshot ले लीजिए. George के entries. You can take a screenshot and you can write it afterwards. It's very simple, sir. केम छे? Easy. Sandeep Kumar is asking me, sir, this is the first lecture. Faizan Pathan કહે છે મજા આવે છે sir. Okay, it's really very easy. Because of you, it is very easy to understand. Yes, Zeba. Sir, hidden entry क्यों बोलते हैं sir? Hidden entry बेटा because this is a cancellation of the bill. Cancellation of bill ऐसा दिया नहीं है ना उन्होंने. तो ये आपको खुद से मन में लेके करना पड़ेगा कि we have our bill which is payable. Now that bill is with us only. That is bill receivable. So bill receivable, bill payable is getting cancelled. तो उसके लिए बोलते हैं बेटा hidden entry. एकता तिवारी. Sir, you made BOE very easy, sir. Thank you so much. Subhashri is saying. Thank you, beta. Thank you. I am trying to complete this chapter today itself. Priya Pandit. Very good, beta. वो तो करना ही पड़ेगा आपको. तो मुझे 8 नंबर और 9 नंबर समझ में नहीं आ रहा है. अरे बेटा, परचेस और सेल है करण सिंह. क्या है उसमें? अरे तू पहाड़ जाके बोल रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है. इतना फालतू क्वेश्चन है तेरा. चल ये हैरी के बुक्स देख ले. 8 नंबर के बुक्स में क्या है? गुड्स परचेस बाय जॉर्ज. सॉरी, परचेस बाय हैरी फ्रॉम जॉर्ज. तो परचेसेस किसके लिए हुआ? हैरी के लिए. और जॉर्ज के लिए क्या हुआ? सेल्स. प्रीतेश सुतार बोले छे यस सर, एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट. यस बेटा. करण सिंह, मुश्किल बात समझ में आती, इजी बात नहीं समझ में आती. क्या कर रहा है तू? एकदम इजी है बेटा. हो गया? डायग्राम निकाला ना, पूरा क्लियर, पिक्चर क्लियर हो जाएगा. दैट डायग्राम विल हेल्प यू आउट. Okay, so see what are reasons behind it. Why this chapter you think is very difficult? Yes, some reasons. Before starting 7 number and 8 number, I will give you sequence of 7 and 8 instead of beta. In the notebook you have to write yourself. I'm not going to dictate you all these entries. I'm going to explain you all sequence. Take a screenshot, do hard work, write it properly in your notebook, draw this diagram, maintain your notebook. See, my Pune branch students, because I'm getting 180 sessions, it's very new. I can't compare it with our this board of studies sessions daily to us. So normally, and that is a face-to-face batch. So it is used to, I'm used to dictate all problems in the class. But you students are very smart than as compared to Pune branch. I know that. So basically what happens? Why students are finding these chapters difficult? थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत आ रहा है लगता है. हाँ. So why students are finding this chapter difficult? Because you are not used to this situation. You are not visualizing these situations. Because suppose in my 12th standard or in my foundation also, yes, I was very confused for this chapter. Why? Because normally my faculty is not concentrating on all these situations, that 4 situations. So he taught us all situations. But he never asked me
cross questions. So that's why there was confusion. Okay. And in accommodation bill, normally he used to write all entries one by one, one by one, one by one, and he was asking us, sir, समझ में आया, समझ में आया? हम लोग बोलते थे, हाँ sir, समझा. But we never drawn that diagram. And this is how I improved myself in my teaching career also, by making it very simple, by drawing these diagrams or by solving in a simple way. So this is how you should grasp all these things. First, you tell to yourself, अपने आप को बोलना चाहिए कि what are entries? So sit for 15 to 20 minutes. Recall one by one entries. You ask to your friends directly, चल बता, will endorse this honor. चल बता, will endorse honor. You take any situation. You ask to your friends, discuss with them. That is the best way of study. Solve same illustrations minimum 2 to 3 times. Instead of solving 15 new questions, first have grip on these same questions of study material. Study material is sufficient, my friends. I'm telling you, if you solve study material thoroughly, yes, मैं उल्टा हमेशा हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज फैकल्टी को मैं बोलता रहता हूँ, फाउंडेशन के मैम को, तो अरे मैम कितना डालोगे आप क्वेश्चंस, रुकते ही नहीं है, बच्चे की जान लेगो क्या, इतना मैं उनको बोलता रहता हूँ. कितने क्वेश्चंस है भाई, स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है. और कितना, और मैं बोलता हूँ हर इसमें इंप्रूवमेंट, हर इसमें इंप्रूवमेंट. कभी भी हम लोगों का डिस्कशन भी होता है तो हर इसमें सर और क्या इजी करना है, और क्या प्रॉब्लम्स लाने, मतलब वो हमेशा ऐसे बेताब रहते हैं कि कितने क्वेश्चंस मैं ऐड करूं. मैं बोल देता हूँ भाई रुक जाओ अभी बहुत हो गया, इतना मत डालो क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एटलीस्ट 15 to 20 minutes. First recall all your concepts and then you start your questions. Don't refer answer directly. First you solve in your own way, then watch my session and then resolve it. So third time you are solving it by using TKG technique. And this is how you are going to get your success in first attempt by scoring. See, it's very simple. First, understand the concept. Second, solve that question. Third one, after solving, watch my session. How sir thinks for this question and then resolve it. Okay. So this will make you perfect. It's not only by looking, by doing auditing. हाँ ये आया समझ में, ये आया समझ में, ये आया समझ में. कोई उसको एफर्ट्सलेस है. फिर ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थिंकिंग बढ़ाना पड़ेगा. चलिए चलो. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7. कुशल पुजारी जी, सिटीजन का कैल्सी बहुत ही अच्छा है, उतना यूज कीजिए, बहुत अच्छा कैल्सी है. सिटीजन यूज कर लेना, सिंपल वाला 100 रुपीज वाला. मैं तो गरीबों का ही कैल्सी यूज करता हूं. मेरा सिंपल कैल्सी, डोंट यूज फैंसी कैल्सी, सिंपल 100 रुपीज कैल्सी. चलिए, start with illustration number 7. I'm going to give you sequence of illustration number 7. It's very simple question actually. Illu 7. Mr. Dravid draws 2 bills of exchange. Yes, we'll solve this question. 7 and 8 is similar insolvency. So you can do by your own 8 number. So one more question. Have patience of last 10 to 15 minutes. Okay. Mr. David draws 2 bills of exchange. 6,000. I will call it as bills receivable 1. $10,000. I will call it as bills receivable 2. Of bill of exchange 6,000. The bills of exchange rupees 6,000 is for 2 months and 10,000 is for 3 months. So 6,000 की maturity date क्या है? 2 months. 2 months means March में आएगा.
fourth maturity date is 4th March and 10,000 4th April. These bills were accepted by Mr. Thomas. Okay, Mr. Thomas के books में accept किया. On 4th March, that is 4th March means first bill, renewed the first fresh bill with 18% interest for period of next 2 months. So what is the first bill ka amount? First bill ka amount is 6,000. 18%, 2 by 12. 2 by 12. So what is the interest entry? 6,000 into 18% divided by 6. कुछ तो गड़बड़ हुआ. 18%, 180 rupees. 180 rupees. So yes, 1 by 1 entries. Number 1 entry, bill drawn. 2 bills together. 2 bills. That is Jan 1. What is second entry on 4th March? First entry is dishonor. Dishonor, first bill. On the same date, sequence is interest, income, interest income due, because for us, it's the income. And number 4, he asked for fresh bill. Fresh bill, which is equal to original amount plus interest amount. Fresh bill, original amount 6,000 plus interest amount 180. So this is a 4th entry. 6180. Mr. David agreed this proposal. On 20 March, Thomas retires the acceptance. That is a second bill. So now this is third bill actually. Renewal bill is a third bill. Okay. And second bill is getting retired. Retired means early payment. Okay. So when it is on 20th March, retirement of bill. So this is a 5th entry. Retirement of second bill, in which loss, 10,000 के bill में loss कितना हुआ? Rebate. Loss is ₹100, which is called as rebate. So 5th entry, retirement of bill, loss ₹100. Loss ₹100. And before the due date, renewed bill, third bill, dishonor. So beta, before the due date. Now date is not given, so question mark. Actually, if there is no 2 months bill, na, so 4th April plus 2 months bill, 7th May. Okay. April, May, 7th May. Third bill dishonored. Third bill dishonored of rupees 6,180. 6,180 and cash received plus bad debts. Thomas becomes insolvent and 50 paisa in a rupee received. So cash plus bad debts 50% and Thomas 50%. Cash received 50%. So 7 entries we have to pass. How many entries? 7 entries. Yes, I will show you all these entries. So see, 1 by 1, 7 entries ka sequence. How many entries sequence, beta? Please do it carefully. Whenever you are solving this question, first try to understand sequence.
If you understand sequence, nothing is difficult. See now. सीक्वेंस लिख लिया क्या आपने? चलो ध्यान दीजिए, सीक्वेंस देखिए. फर्स्ट वन, bill drawn, bill drawn, bill drawn. क्या हो रहा है? bill drawn, bills receivable account debit 6,000, bills receivable account debit 10,000 to Thomas. But Thomas account is getting closed and bills receivable account is getting open. Now on 4th March, 6,000 ka bill is reopened. Mr. Thomas bill reopened and first bill is getting closed. 6,000. Thomas account debit reopened to interest income 180. To interest income 180. 6,000 and 180. Okay. So now Thomas is showing 6,180 balance. And this is a fresh bill and Thomas is getting closed and fresh bill 6,180. Fresh bill. Second bill getting closed. Bank account increasing. Discount is our loss to bills receivable. And what about last bill? That is the third bill is getting dishonor. So Thomas is reopened. 6180. This account is getting closed and we received 50%. 50% from Thomas and 50% is bad debts. So Thomas account is getting closed and bank account and bad debts account will be get open. Okay. So these are all entries, sequence plus entries. I will show you sequence. Yes, you can take a screenshot. And this is the last one. I hope you are getting this entries ka sequence. Do it properly. Bill drawn, bills receivable account debit to bills receivable 1 account debit, bills receivable 2 account debit to Thomas. Dishonor of first bill 6,000 का bill dishonor हुआ. So entry will be bills receivable को credit किया, Thomas reopen किया. So Thomas account debit to bills receivable. Interest income, Thomas account debit to interest. Fresh bill drawn, bills receivable 3 account debit to Thomas. Thomas is getting close. Retirement of second bill, bank account debit, discount account debit to bills receivable number 2. Third bill dishonor, Thomas is reopened. So Thomas account debit to bills receivable, Thomas को debit देंगे, bills receivable को credit करेंगे, and cash account debit, bad debts account debit to Thomas. So bills receivable cancel हो गया, cash account debit, bad debts account debit to Thomas. So these are all entries. I hope you enjoyed sequence. चलो जल्दी से sequence को याद कर लो. Once you got the sequence and try to speak it loudly. जोर जोर से entries बोलना. 6-7 entries जोर जोर से बोलना. You will understand each and every entry. Yes. Share it to maximum friends. And whenever you are renewing bill, you have to dishonor that bill. जब भी renewal करोगे तो dishonor करना, ये हमेशा याद रखो. Thank you. आई होप पूरा समझ में आया है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए.
इतना ही मेरा ये है, और आप जोर जोर से ये एंट्रीज आज करना, ये मेरा सेकंड आपको सजेशन है। फॉलो करना नहीं करना ये आपका बात है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन 9, 10, 11 विल बी योर होमवर्क। अच्छा ये भी बता देता हूं आपको, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल दीज एंट्रीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। In next session, we are going to cover one new chapter. And second one, yes, these entries of 9, 10, 11, ये मैं लेने की कोशिश करूंगा, which are easy, that I will not take, and that which are difficult one, we will take in the class. Thank you. बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत सिंपल चैप्टर है, लॉजिकली सोचिए, एक दिन पूरा लीजिए और सोच के देखिए और सॉल्व कीजिए ऑल इलस्ट्रेशंस इन फेयर नोटबुक, प्रॉपरली लिखिए एंड देन डू रिवीजन ऑफ दैट नोट्स। ओके, चलो, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।